हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम 2022 यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल मैप का जो पेपर बनाया था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी वन से लेके सिक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम सेवन और एट क्वेश्चन छः क्वेश्चन में से आपको पता ही है एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल छः क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सेवन ए, क्वेश्चन नंबर सेवन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेवन बड़ा ही टफ था, हार्डली किसी ने करा होगा और हमें अवॉइड ही करने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेराशेवा मूवमेंट ऑफ सदर्न डेक्कन इन द 12th सेंचुरी was essentially an attempt at social reform discuss। तो वीराशैवा मूवमेंट जो था वो बेसिकली रिलीजियस मूवमेंट की तरफ काफ़ी लोग देखते हैं, बट इन रियलिटी वो एक सोशल मूवमेंट था। इसी को जस्टिफाई करना है, इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। डिस्कस पूछा है तो मल्टी डायमेंशनल आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन एक चीज जो अवॉइड करनी होगी आपको वो ये है कि इसके काउंटर पॉइंट्स मत देना, ठीक है। दो मैं चीज़ें ओपन रखता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सब लोग का अपना अपना इनोवेशन और इनोवेटिव तरीका होता है जिसमें काफ़ी बार मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाते हैं। बट इसमें अवॉइड करना है। इसमें अगर आप लिखोगे एक तो स्पेस जाएगी, ऊपर से मार्क्स भी घट सकते हैं, ठीक है। इसमें काउंटर करोगे भी क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आंसर क्या होगा, एक जो अगर ड्राफ्ट में अगर देना चाहूँ मॉडल आंसर, अराउंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 250 वर्ड्स, 3 पेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। 3 पेजेस मिलेंगे, 250 वर्ड्स। मैं तो खुद बता रहा हूँ, यूपीएससी मेंशन नहीं करता। The Veerashaiva movement that emerged in the 12th century in the southern Deccan region of India was indeed an attempt at social reform. It was a significant religious and social cultural movement that sought to challenge the prevailing social order, especially the Brahminical hierarchy, and promote social equality and religious inclusivity. ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। Veerashaiva movement was spearheaded by the influential saint and poet बासवन, ठीक है। गॉड भगवान बासवन, बासवन भी लिख सकते हो बट अवॉइड करिए, अदरवाइज कितनी बार हर बार जब भी बासवन लिखोगे तो भगवान बासवन लिखना पड़ेगा, बट लिख सकते हो। अलॉन्ग विद अदर सेंट पोएट सच एज शरनास। The movement emphasized the equality of all individuals irrespective of their caste or social status. It rejected the traditional Brahmanical rituals of purity and pollution, and the authority of Vedas, which had been long considered the exclusivity of the upper caste. Instead, Virasheva advocated for a direct, personal relationship with God through devotion and inner spiritual experience. कुछ कुछ वर्ड्स को आप हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे। बासवन हो गया, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हो गया, और सब ये सब जो भी आपको लग रहा है, रिचुअल, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, या तो उसी पेन से अंडरलाइन कर दो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है दोस्तों कि इसको दूसरे पेन से लिखो। तीसरा तरीका है कि इनको सीधे कैपिटल लेटर्स में भी लिख के आ सकते हो। One of the central aspects of the Veerashaiva movement was the idea of Kalyan, which means welfare or well-being. The movement aimed to uplift the marginalized sections of society, such as lower caste, women, and economically disadvantaged. It challenged the prevailing social norms and practices that perpetuated discrimination and inequality. Veerashaivas rejected the caste system and the notion of untouchability and advocating for the dignity and equal treatment of all individuals। इसमें दोस्तों ये याद रखना है कि हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, तो वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। आप आंसर पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, बट रीडेबिलिटी ईजी होनी चाहिए। Through their teachings and practices, the Veerashaivas actively promoted social reforms. They encouraged intercaste marriages, communal eating, breaking down the barriers of caste-based restrictions. They established a community-based organization called the Anubhav Mandap, which served as a platform for intellectual and spiritual discussions and debates irrespective of one's caste or social background. Veerashaiva movement also gave importance to the empowerment of women. It rejected the notion of gender hierarchy and upheld the dignity and autonomy of women. Women were encouraged to participate in religious and spiritual activities, compose poetry, and attain spiritual liberation. The emphasis on women's empowerment was a revolutionary idea during that time and contributed to a significant change in the social position of women in the region.
Furthermore, Virashevas emphasized the idea of social service and compassion towards all living beings. They established institutions such as Bas of Kalyan and encourage acts of charity and philanthropy. These initiatives aimed to alleviate poverty and promote social harmony. In summary, यहाँ पे आप conclusion देंगे. हमेशा याद रखो कि introduction and conclusion must है. In summary, the Vairashava movement of the 12th century in the southern Deccan was indeed an attempt at social reforms. और आप चैलेंज जो बातें लिखी है उसको समराइज कर सकते हो या और भी कोई पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन कुछ नया नहीं आना चाहिए आपके कंक्लूजन में, तो आपको सेम चीज़ें दिखेंगी. मैं इसको ज़्यादा रीड आउट नहीं करना, आप इसको पढ़ सकते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ द वीरशैव मूवमेंट वाज प्रोफाउंड एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड शेपिंग द सोशो कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द रीजन. अगर आपको दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हो upscqa@gmail.com. ठीक है, आप मेल कर दीजिए, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों. द क्वेश्चन नंबर 7B 15 मार्क्स का है. वेरियस घरानाज ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वर आउटकम्स ऑफ पैट्रोनेज बाय रीजनल प्रिंसिपली कोर्ट्स रेदर देन सेंट्रल इंपीरियल वंस डिस्कस. तो ये जो बहुत सारे घरानाज हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये देन है आपकी प्रोविंशियल कोर्ट्स के, जो प्रोविंसेस आपके थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस, जयपुर, अवध वगैरह वगैरह. सेंट्रल इंपीरियल वन जैसे मुगल, मराठा, इन सब ने ज़्यादा इस पे काम नहीं करा. ये आपको जस्टिफाई करना है इस पे. जैसे मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन ही टफ है 7. मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूँगा अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी का अच्छा कंट्रोल है कल्चर पे, ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, या दो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, एक ठीक ठीक आता है, तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है. बट केयरफुल रहना, मेक और ब्रेक वाली बात हो जाती है. कभी कभी क्या होता है, हम स्टार्ट कर देते हैं कोई क्वेश्चन, फिर बीच में काटते हैं और टाइम निकल जाता है. ठीक है, तो टाइम ही टाइम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम में, तो वही परेशानी रहती है इसको लेके. तो आप थोड़ा सा टाइम लगाइए, 1-2 मिनट लीजिए, लेकिन सोच लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. The development and proliferation of various gharanas in Hindustani classical music can indeed be attributed to the patronage of the regional princely courts rather than central imperial ones. The gharanas emerged as distinct styles and lineages within Hindustan classical music, characterized by their unique musical approaches, techniques, and interpretations. They were nurtured and supported by regional rulers and aristocrats who served as patron of the arts. Example भी आप यहाँ पे दे सकते हो. During the medieval and early modern periods in India, the subcontinent was politically fragmented with numerous princely states and kingdoms. ये यहाँ पे 18th और 19th century भी लिख के आ सकते हो. These regional rulers, known as Rajas, Nawabs, Maharaj, had considerable power and wealth. Many of them were enthusiastic patrons of music, art, culture, and they established royal courts that became centers of artistic excellence. The regional princely courts played a crucial role in providing patronage and support to musicians, singers, and instrumentalists. They would invite renowned musicians and scholars to their courts, bestowing upon them not only financial support but also prestige and recognition. These musicians often played an important role as court musicians, imparting their musical knowledge and training to the next generation. As a result, different gharanas began to flourish in various parts of India, each associated with a particular court and patronage. Example देना बहुत ज़रूरी है. The Gwalior घराना emerged in the court of Gwalior state, Agra घराना in Agra, Jaipur Atroli घराना in Jaipur, and so on. These gharanas were characterized by their unique musical techniques, composition, improvisation styles that were nurtured and passed down through generations within the respective courts. The regional princely courts provided a conducive environment for musical innovation and experimentation. They attracted talented musicians and scholars who, under the patronage of the rulers, had the freedom to explore and develop their musical ideas. The royal courts also served as important platforms for musicians to showcase their skills and gain recognition. In contrast, थोड़ा सा आपको सेंट्रल इंपीरियल कोर्ट का भी मेंशन करना पड़ेगा, सिंस वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है. Such as the Mughal court were cosmopolitan and diverse in their patronage of arts and culture. While they did contribute to the development of Hindustani classical music, their influence was not as significant and in shaping the gharanas. The central imperial courts often attracted artists and musicians from different regions, resulting in a blend of different styles and influences. In conclusion, the gharanas of Hindustani classical music were predominantly outcomes of patronage by regional princely courts rather than the central imperial ones.
The regional rulers, with their wealth and love for the arts, provided the necessary support and environment for musicians to flourish and develop their unique styles. The Gharanas, with their distinct approaches and techniques, owe their existence and evolution to the patronage of these regional courts, which played a vital role in shaping the rich and diverse heritage of Hindustani classical music. टफ क्वेश्चन है, चार भी बना के आ सकते हो कि भैया ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के पार्ट थे, जयपुर, आगरा और ग्वालियर, इसके एग्जांपल ये ऐसे करके कर सकते हो. The prolonged conflict between Vijayanagar kingdom and the Bahmani successor states was influenced less by cultural factors and more by strategic and economic considerations. Comment मेरे हिसाब से ये आसान क्वेश्चन है, तो ये टीजिंग क्वेश्चन कहता हूँ मैं इसको. आसान इसलिए क्योंकि सीधा आंसर आपको बुक्स में मिलता है दोस्तों. इवन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, मेडिवल इंडिया की एनसीईआरटी में अगर पुरानी वाली पढ़ोगे, ठीक है, सतीश चंद्र वाली पढ़ोगे तो उसमें भी मिल जाएगा. और आपको मेडिवल इंडिया की जो बुक्स है सतीश चंद्रा की, उसमें भी मिल जाएगा. सीधा सीधा आंसर वही छाप के आ जाओगे. प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 7A 7B थोड़े से ट्रिकी हैं, तो फंसना मत कि इसके चक्कर में वो भी अटेम्प्ट करने लग गए. मतलब एटलीस्ट उन दोनों में से एक तो अच्छा आना चाहिए. ये क्वेश्चन सिंपल से ये कह रहा है कि भाई कल्चरल फैक्टर्स की वजह से नहीं लड़े विजयनगर भैमानी, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजन थे. ठीक है, काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं आजकल के टाइम में कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, उनको तो यही मौका चाहिए होता है. ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, ये इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजन्स थे. इसमें आप तुंगभद्रा कृष्णा नदी के आसपास के रीजन्स थोड़े से ड्रॉ अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, मज़ा आ जाएगा. हम्पी वगैरह दिखा देना थोड़ा, है ना, और दिखाते रहना यहाँ यहाँ फाइट फाइट होती रही इनकी, तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे. अगेन 3 पेजेस मिलेंगे, पेज भरना भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पेज खाली नहीं छोड़ना एग्जाम में, वरना अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे. आगे बढ़ते हैं हम. द प्रोलॉन्ग्ड conflict between Vijayanagar and Behmani successor states in medieval South India was indeed influenced more by strategic and economic considerations rather than purely cultural factors. While cultural and religious differences did play a role in exacerbating tension, it was strategic and economic interest that formed the primary driver of the conflict. One of the key factors behind the conflict was the strategic importance of the region. The Vijayanagar kingdom, located in the Deccan Plateau, sought to expand its influence and control over trade routes, particularly those connecting the northern and southern parts of subcontinent. The Paimani successor states, on the other hand, emerged as rivals vying for control over these lucrative trade routes. This struggle for strategic dominance resulted in frequent clashes and territorial disputes between the two powers. Economic considerations also played a significant role. Both the Vijayanagar and Behmani successor states were highly reliant on trade and commerce for their prosperity. एक और तरीका क्या होता है आंसर लिखने का कि इकोनॉमिक जैसे वर्ड हो गए, विजयनगर जैसे वर्ड हो गए, इनको हाईलाइट करना. ठीक है, स्ट्रेटेजिक को, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो. ठीक है दोस्तों. The control over important trade centers and ports such as Goa, Calicut was crucial for their economic interest. The competition to gain control over these trade hubs and maximize revenue from trade routes fueled the conflict. Economic rivalry and the desire to secure economic dominance were thus driving forces behind the prolonged conflict. Furthermore, the conflict was also fueled by political ambitions and power struggles. Both the Vijayanagar and Bhimani successor states were ambitious powers seeking to expand their territories and influence. Again, ये भी strategic के अंदर ही आता है. The desire to establish hegemony and gain control over resources and revenues motivated their actions. The Vijayanagar kingdom in particular pursued a policy of aggressive expansion, attempting to consolidate its authority over the region and suppress its rivals. While cultural and religious factors cannot be completely discounted, they were often utilized as justification or rallying points in the conflict. मतलब ये होता था अपने सोल्जर्स वगैरह को मोटिवेट करना है तो उसमें चीज़ें लेके जाते थे. अदरवाइज तो विजयनगर भी सेकुलर था, भैमानी भी ऑलमोस्ट सेकुलर था. विजयनगर किंगडम विद इट्स हिंदू रूट्स एंड द भैमानी सक्सेसर स्टेट्स with their Muslim rulers did have differing cultural and religious practices which added a layer of tension to the conflict. However, it was strategic and economic considerations that formed the core drivers of the conflict, as both sides sought to maximize their power and control over vital resources and trade routes. In conclusion, prolonged conflict between Vijayanagar and Bahmani states in southern India was primarily strategic and economic. The desire for territorial expansion, control over trade routes, and economic dominance was primary motivation behind the conflict. While cultural did play a role, it was
स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट विच वर मोर इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये वाला आपको पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। ट्रेड एंड कॉमर्स इन द मुगल एम्पायर ब्रॉट द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इनटू अ सिंगल मार्केट। कमेंट। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो बढ़िया तरीके से चली मुगल एम्पायर में, उसने भारत को सिंगल मार्केट बना दिया, भारत को, ठीक है। भारत मतलब पंजाब से लेके बंगाल, साउथ इंडिया, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा आप मेंशन कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स played a crucial role in the Mughal Empire, facilitating the integration of the Indian subcontinent into single market. Mughals implemented policies and established a robust network of trade routes that promoted economic interactions, facilitated the movement of goods and people, and contributed to the overall unity of the region. Firstly, Mughals created a favorable environment for trade and commerce. The empire had a stable and centralized administration which provided security and protection to traders and merchants. The stability and security encouraged the growth of trade networks, and facilitated the long distance trade within the empire. The Mughals also standardized weights, measures, currency, providing a common framework for economic transactions across the subcontinent. Mughal rulers actively encouraged trade by constructing and maintaining infrastructure such as roads, bridges, sarais along major trade routes. GT Road, for instance, facilitated the movement of goods and people from Bengal to Punjab, connecting various regions and fostering economic integration. Mughal Empire's vast territorial extent and diverse regions offered a wide range of resources and commodities. The empire encompassed fertile agricultural lands, rich mineral resources, and skilled artisans, which contributed to the production and exchange of goods. Regional specializations emerged, with different areas becoming known for specific industries or products. For example, Bengal was known for its textile industry, Gujarat for maritime trade, Kashmir for its fine textile and shawls. The regional economic specialization led to the increased interdependence and trade between different parts of the subcontinent. Mughals also actively participated in international trade, connecting the Indian subcontinent with the broader global economy. They maintained diplomatic relations with various European powers and Central Asian powers and facilitated the trade with them. The port cities of Surat and Hooghly served as important centers of maritime trade, attracting merchants from across the world and facilitating the exchange of goods and ideas. The integration of the Indian subcontinent into single market under Mughal led to the growth of urban centers and market towns. Towns and cities such as Delhi, Agra, Lucknow became thriving commercial hubs, attracting traders from different regions and fostering a cosmopolitan atmosphere. These cities became centers of economic activity and cultural exchange, further contributing to the integration of the subcontinent. In conclusion, trade and commerce played a very important role. यहाँ अगेन समरी दो और आगे बढ़ो, ऐसे आप आंसर कर सकते हो। मुगल emphasis on trade and their active participation in international trade contributed to the overall economic integration and prosperity of the empire. थोड़ा सा आप यहाँ पे मुगल का भी पर्सपेक्टिव डाल सकते हो कि they were forward looking, progressive and wanted to make India uh, one of the best empires in the world, और in the history भी लिख सकते हो, तो वो चीज़ें आप करके आ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक कभी अगेन आसान सा क्वेश्चन कि डेक्कन की जो औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी थी, वो मेजर फैक्टर है मुगल के डिक्लाइन का। डिस्कस अभी थोड़ा सा इसमें ये हो जाता है कि काउंटर पॉइंट भी आप देना चाहोगे तो ध्यान रखना कि दो भी तो थोड़ा सा देना, अदरवाइज डिस्कस पूछ रहे तो ज्यादा आपको पॉइंट देने नहीं है। एक चीज जो मैंने यहाँ पे नहीं कर रखी आंसर्स में वो ये है कि किसी हिस्टोरियन के नाम नहीं लिखे जो आपको लिख के आने होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपको 15 में से 10 तक मार्क लेने हैं तो आपको हिस्टोरियन के नाम लिख के आने पड़ेंगे। तो औरंगजेब, इनके ईयर्स लिख सकते हो, कब से कब तक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कब से कब तक रूल करा औरंगजेब ने। Aurangzeb's Deccan policy is indeed considered a major factor in the decline of the Mughal Empire. Aurangzeb's ambitious military campaigns and policies in the Deccan region strained the empire's resources, destabilized its administration, and contributed to the overall decline of the Mughal Empire. Aurangzeb's Deccan policy aimed to expand Mughal territory and establish direct control over the Deccan region, which was known for its wealth, resources, and strategic importance. However, the prolonged and costly military campaigns in the Deccan, particularly against Marathas,
drained the empire's resources. These campaigns required significant financial and human resources, leading to the heavy taxation, increased debt, and strained economy. The Deccan campaigns also led to the diversion of imperial attention and resources away from other crucial regions of the empire. Aurangzeb's preoccupation with the Deccan left the northwestern frontier vulnerable to external threats such as death of the Sikhs, Jats, and expansion of the Safavid Empire. The empire's inability to effectively address these challenges weakened its control over northwest and contributed to the decline of the Mughal Empire. Furthermore, Aurangzeb's backward-looking religious policies in the Deccan, marked by a strict enforcement of Islamic Sunni law and the suppression of non-Muslim practices, alienated local Hindu rulers and population. This resulted in widespread resentment and resistance, particularly from Marathas, who capitalized on the discontent to build their own empire. The Marathas rise as a formidable force and subsequent guerrilla warfare. गुरिल्ला की स्पेलिंग देख लो काफी लोग गलत लिख के आते हैं Tactics they employed against the Mughals proved to be a significant change to the empire's stability and control in the Deccan. The costly and protected Deccan campaigns also had a detrimental effect on Mughal administration. The prolonged absence of Aurangzeb from Delhi weakened the central authority as local governors and nobles gained more autonomy. The decentralization of power weakened the empire's ability to effectively govern its vast territories and contributed to the एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी उसके बाद थोड़ा जागीरदार का भी मेंशन कर सकते हो कि डेक्कन में जागीरदारी मिली नहीं लोगों को उसके बाद थोड़ा सा आप ये भी लिख सकते हो कि डेक्कन की जो सल्तनत थी उनको सही से हैंडल नहीं करा औरंगजेब ने ये पॉइंट्स भी आप लिख के जा सकते हो और एंड में वही लिख देना कि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो फाइनेंशियल स्ट्रेन डाला पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुआ और वंस a strong ruler like Aurangzeb died, it facilitated the decline of Mughal Empire. ठीक है ऐसे आप लिख सकते हो लाइक चेन ऑफ साइकिल्स या कोई स्टेटमेंट वगैरह डाल सकते हो तो और अच्छा है आगे बढ़ते हैं द वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द 15th century contributed to the flourishing of provincial literature discussed with appropriate examples. ऐसे क्वेश्चंस में लोगों के पास ज़्यादा लिखने को होता नहीं है तो इंडिया का मैप बनाओ ठीक है बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नॉर्थ में कोई और गुजरात में कोई और है ना नरसिम्हा मेहता वगैरह ऐसे आप लिख के आइए और उनके लिटरेचर थोड़े मेंशन कर दीजिए इससे आपके पेज भरेंगे और लिखने के लिए भी होगा नहीं और मार्क्स भी ज़्यादा ही आएंगे दोस्तों 20 मार्क्स का क्वेश्चन है थोड़ा सा बच के रहना क्योंकि एट्थ का ए बी तो बहुत आसान है सी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 में से आपके 5-6 मार्क्स आ रहे हैं ना थोड़ा सा तो कंटेंट ठीक ठाक लिख के आना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार सेम पॉइंट लिख के आते जा रहे हो काफ़ी बार लोग पेज भरने के लिए सेम पॉइंट लिख देते हैं स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट भी लिखो तो स्ट्रेटजी से लिखो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा सा सेम हो सकता है ठीक है तो वैष्णव भक्ति इन 15th century had a significant impact on the flourishing of provincial literature in India. The devotion movement centered on the worship of Lord Vishnu and his various incarnations inspired poets and writers in different regions to compose vernacular literature reflecting the diverse cultural and linguistic identities of the provinces. One notable example is the impact of Vaishnava Bhakti tradition on the literature of Braj region in the present Uttar Pradesh. Braj Bhasha, a dialect of Hindi, became a preferred language of expression for poets influenced by the devotional fervor of Vaishnava Bhakti. These poets composed devotional songs such as padas and kirtans, which celebrated the divine love between Radha and Krishna. Notable poets from the Braj region such as Surdas, Tulsidas, Nandas, whose works continue to be celebrated as a masterpiece of devotional literature. In the eastern region of Bengal, Vaishnava Bhakti tradition gave rise to literary contributions of Chaitanya Mahaprabhu and his followers. Chaitanya propagated the worship of Lord Krishna and the ecstatic chanting of the Hare Krishna mantra. His teachings inspired a rich body of Bengal literature known as Chaitanya Charit Amrita and Vaishnav Padavali. These works, composed by poets such as Vidyapati, Jayadev, Chandidas, celebrated the divine's love of
Radha and Krishna emphasizing devotion and spiritual union. In the southern region of Karnataka, the Vaishnava Bhakti tradition influenced the composition of literary works in Kannada. The Haridas movement, spearheaded by saints such as Purandar Das and Kanak Das, emphasized the devotional singing and glorification of Lord Vishnu. These saints composed numerous devotional songs such as Deva Ranmas in Kannada, which continue to be widely sung and revered in Karnataka's cultural landscape. The impact of the Vaishnava Bhakti on provincial literature was not limited to these regions alone. The devotional fervor and emphasis on personal devotion to the divine cult cut across linguistic and regional boundaries, inspiring poets and writers in various other languages and regions. For example, the Alvars in Tamil Nadu composed Tamil hymns known as Divya Prabandham, expressing their intense devotion to Lord Vishnu. In conclusion, the Vaishnava Bhakti of 15th century played a significant role in the flourishing of provincial literature. The movement inspired poets, writers in different regions of India to compose vernacular works celebrating divine love, devotion, and spiritual union. These literary contributions in regional languages enrich cultural and literary landscape of the provinces, preserving and promoting the values and ideals of the Vaishnava Bhakti tradition. So that's all. ये हमारा 2022 का पेपर वन जो है वो पूरा सॉल्व हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स इससे बेटर आंसर भी आप लिख सकते हो, बट इन दी जो टाइम होता है 3 घंटे, उसको सोचते हुए ठीक ठीक आंसर लिखो, आगे बढ़ो और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके आओ। दैट्स ऑल, थैंक यू।